Hello and a very good evening to you. You're watching Breaking Ground in Times Now. I'm Pratishtha Chandran. After endless excuses, delays and attempts to claim credit, the Congress party has now officially decided its stand on Ram Mandir and the Pran Pratishtha event on the 22nd. It's official. The Congress leaders Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary will not be attending the event. In the official statement by the Congress party, the Congress has said that religion is a personal matter, but the RSS and the BJP have made a political project of the temple in Ayodhya. The party said that the top brass has decided to decline the event to the invitation, which is clearly an RSS BJP event. The Congress party maintains that the BJP is no one to decide who's religious and who is not. देखिए, धर्म आस्था का विषय है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? धर्म को आस्था का विषय क्यों नहीं रहने देना चाहती? आमंत्रण मिल रहा है, कौन जाएगा, कब जाएगा, ये भाजपा और बीएचपी थोड़ी तय करेगी। सर, लेकिन कांग्रेस को लेकर अब बीजेपी ये बोल रही है कि एक इनविटेशन दिया गया था जिसके लिए सैकड़ों लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये इनविटेशन मिला लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इंसल्ट की गई है। भाजपा कौन सी ठेकेदार? भाजपा को ठेकेदार बनाया किसने? भाजपा को हम ठेकेदार नहीं मानते। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है 2024 से पहले, इसलिए ये इन्विटेशन को डिक्लाइन किया। भाजपा राजनीति करना चाहती है, उसकी इस घटिया राजनीति को लोग समझते हैं। Remember, Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary are just the latest in a series of opposition leaders who have declined the invitation. Let's tell you who have been invited and who will skip the event. The pictures on your screens. Sonia Gandhi, the former Congress chief, has been invited but will not be attending. Mallikarjun Kharge, the Congress president, has been invited and will not be attending. Adhir Ranjan Chaudhary, the leader of the Congress in the Lok Sabha, has also been invited and will not be attending. Mamta Banerjee, the TMC chief, has also been invited but is likely to skip. Invitations have also been sent out to Arvind Kejriwal and there's no word yet on whether he will be attending or not. Sitaram Yechuri as well, remember, had said that this is a state-sponsored event and decided to decline the invitation. Naturally, the BJP believes the Congress party is now towing the IUML line. The Congress party officially stating that its senior leaders will not be there in Ayodhya on the 22nd of January should come as no surprise. Because the Congress party over the last few decades really took no steps to see that there should be a temple at Ayodhya. In fact, the Congress UPA government filed an affidavit before the Honorable Supreme Court to deny the existence of Lord Ram. They stood in court and never wanted an early hearing of the issue. Now that a temple has come up there, the very fact that they are saying they won't be there, it is part of what they've always believed, that they didn't want a temple there. And saying that this is an event of the BJP or the Congress or the RSS, this is an excuse. Because in reality, this does not fit with the Congress party's own thinking. Otherwise, they would have been there out of affection. And here's why the comparison to IUML is being drawn. Let's remind you, viewers, what the IUML-linked body, Samastha, had said in its editorial just a few days earlier on Ram Mandir. It had said that January 22nd ceremony is a litmus test to convert India into a Hindu Rashtra. And leaders like Sitaram Yechuri have wisdom to understand that. It said that secular democratic people of India have the same tenacity as Yechuri from Sonia Gandhi, and that's what people of India are expecting, calling on the Congress party to also decline the invitation to the Ram Mandir event. So IUML had given this piece of advice to the Congress party and had said that people are expecting a Congress party to decline the event. Back then, remember, the Congress party had said that it is going to think about the invitation and then see whether it wants to be a part of the event or not. Now, finally, the official word from the Congress party coming in, the Congress party has said that it will not be a part of the Pran Pratishtha event. And the Congress party has also issued an official statement and it goes on to call it an BJP RSS event. Let me read out from the official Congress statement. It says, Lord Ram is worshipped by millions in our country. Religion is a personal matter, but the RSS and BJP have long made a political project of the temple in Ayodhya. The inauguration of the incomplete temple
temple by the leaders of the BJP and the RSS has been obviously brought forward for electoral gain, while abiding by the 2019 Supreme Court judgment and honouring the sentiments of millions who revere Lord Ram. My colleague Shivani Sharma joining us from Ayodhya. Shivani, there were a lot of speculations on whether the Congress party will attend the event or not. This is an event not of any party, but for the Ram Mandir, for which people across the country and the world have been waiting for. But the Congress party reducing the event to just an event of the RSS and the BJP. See, when we are reporting from Ayodhya, we see a lot of excitement, and not only from one party or a particular state. There are people from across all sections of the society. There are people from southern part of the country. There are people from North India. There are people from across the globe. So this is not a ceremony of a particular party or a political event, and that's what the Congress has now showed. The kind of they have declined to the invitation. So what the people in Ayodhya think, let's talk to them. ये बताएगा कि कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं ले रही है. उनका कहना है ये बीजेपी का इवेंट है. क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, हमको सही नहीं लग रहा है. ये दुर्भाग्य है कि बुलाने के बाद, आमंत्रित करने के बाद, जबकि उनके द्वारा ही, उनके प्रयास से ही श्री राम जन्मभूमि का ताला खुला. कांग्रेस के ही प्रयास से ताला खुला, शिलान्यास हुआ, और अब किसी प्रकार से मंदिर बनने जा रहा है. मामला सुलझ चुका है. आमंत्रण हुआ है तो उनको आना चाहिए. आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, आज एक बात उन्होंने कही कि हम अस्वीकार करते हैं इस पूरे निमंत्रण को, क्योंकि यहाँ बीजेपी और आरएसएस का इवेंट चल रहा है. देखिए, राम सबके आस्था के प्रतीक है, और इसमें बिना भेदभाव जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया तो सबको आना चाहिए. अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, आस्था को मानते हैं. आपको क्या कहना है इस बारे में? आप अयोध्या के संत हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो राम जी को बुलाया जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये एक पार्टी का ही एक फंक्शन है. क्या ये सही? जी नहीं, इस सब के लिए बराबर है. कि किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है. राम जन्मभूमि, मोदी जी की कृपा, योगी जी की कृपा हुआ, ये तो राम जन्मभूमि बन गया. इसको पार्टी का नहीं, सारी की निमंत्रण मिला है. आना नहीं, जाना तो अलग की बात है. वो तो विरोधी है, खिलाफ पार्टी है. कांग्रेस विरोध है, इसलिए कांग्रेस विरोध करिए. आपको भी ये लग रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर मंदिर को लेकर? हमको लगता है मैम कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये बीजेपी वाले कर रहे हैं तो भी 60-70 साल राज किए हैं, तो उनको भी करवा लेना चाहिए था. अगर उनको लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया बीजेपी ने, तो सब खरीद लिया, तो वो भी तो 60-70 साल राज किए हैं, उनको भी खरीद लेना था. और अगर निमंत्रण मिलने पर नहीं आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि क्या लग रहा है लोगों में नाराजगी होगी इससे कांग्रेस? बिल्कुल होगी. So this is what the people in Ayodhya think. There are people who are from Ayodhya, there are Sant who are from Ayodhya, and also people from other states who are in Ayodhya who are totally disagreeing with this idea of politicizing the Ram Mandir consecration ceremony, for which all the people are uniting in a way. We see when on ground we report from, it seems that Lord Ram has united people. There might be differences, there might be issues, but this particular consecration ceremony has united people on ground. And in this situation, when the Congress party has declined to the invitation, it is totally politicizing the issue. That's what the people in Ayodhya are thinking. Okay, all right, Shivani, do stay on with us. Let's also get in a political perspective. What really forced the Congress party to decline this invitation? Mithun Vijay Kumar, political analyst, and George Korean joining us on the broadcast. Mr. Korean, would you want to weigh in on that? The Congress party all this while saying, we're going to think about it, we'll let you know. Now, today, what has forced the Congress party to decline an invitation to an event for which people across the country have been waiting for? Well, first of all, very good evening to you, Pratibha, to my colleague here, Nitin, and to your audience. Let me begin by saying, the trust has, just as a formality, given the invitation to Congress leaders so that, they can, be rest assured that, they have done the formality. Having said that, Lord Ram, or the belief in Lord Ram, is a matter of personal belief and, faith. And so I strongly believe that, this consecration ceremony has been more of a political event than the religious event to begin with. And
Having said that, we all know that ever since the demolition of Babri Masjid in Okay, 1992, demolition of the Babri Masjid has been spoken of. That has been settled in the Supreme Court. So I hope we won't be speaking about that. Mr. Kurin, I just want to ask you two things that you mentioned. You said this was only a mere formality. Is there any way that you can prove that, in fact, Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge were one of the first few invitees? They were given invitations right in the beginning when other political parties were not even given invitation. First that. And secondly, you're saying it's a political event. How is it a political event? Well, Pratibha, let me bring it to your audience. Notice that, it's a political event because, the Bharatiya Janata Party, or for that matter, the RSS, BJP have been trying to polarize the Hindu voters in the name of Ram Mandir in Ayodhya. And it goes without saying because Prime Minister Modi and Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, and VHP lead, the RSS leader Mohan Bhagwat are going to address the nation from Ayodhya on the consecration ceremony. So that goes without saying. It makes it a political event, and it's nothing but to in the run-up to election 2024, Bharatiya Janata Party is trying to polarize Hindu voters. But let me make it categorically clear that the Congresses are as bucks of Lord Ram and by heart. So it goes without saying. At an appropriate time, we will make a visit to Lord Ayodhya. Okay. I'll you're saying that I want to take a response from Mithun Vijay, but before that, I quickly want to go across to Aishwarya as well, who is joining us. Aishwarya is joining us from Ayodhya. Aishwarya, there are people coming in from across the country. How are people viewing this Congress party declining the invitation for the Ram Mandir event? Well, certainly there was a divide within the Congress party, and it was the Karnataka Congress who were making plans to visit Ayodhya, but the High Command later declined it, and they called it a very sensitive issue. Joining with me is Jagat Guru Paramahansacharya from Ayodhya, one of the prominent monks in Ayodhya. आज अयोध्या के अंदर जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है 22 जनवरी को, उससे पहले आज कांग्रेस पार्टी ने डिक्लाइन कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी को जो इनविटेशन दिया गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ये सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम लोग इसको नकारते हैं, और उन्होंने कहा ये एक तरीके से बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से इनका बयान आया अभी सोनिया गांधी का, सुन करके मुझे ऐसा लगा कि पापी आदमी को कितना भी प्रयास करो गंगा नहीं नहा सकता। गयो न मज्जन पाव भागा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इनको पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम जो है भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं। इनको इतिहास का अगर ज्ञान न हो, आज पूरे दुनिया में अगर राम राज की चर्चा होती है, जिस राम राज की, वो प्रभु श्री राम भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, और राम जी का जो है पूरे विश्व में राम जी के आदेशों का पालन हुआ करता था। तो राम जी के मंदिर का जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, ये भारत का एक बहुत बड़ा गौरव है। वो प्रभु श्री राम जब लंका विजय करने के बाद में विभीषण ने कहा कि प्रभु लंका आपकी है, तो राम जी ने कहा नहीं, मुझे लंका नहीं चाहिए, लंका तुम रखो तुम्हारे पास। हमने तो सिर्फ इसको इसलिए मारा कि ये भगवती सीता का हरण कर लिया और समझ नहीं रहा था, इसलिए मारना पड़ा इसको। वो प्रभु श्री राम का जो है उदार चरित्र। तो इनको जो है, चूंकि इसीलिए तो लोग सोनिया गांधी को कहते हैं ना कि यह जो है तो विदेशी है और इसको कभी जो है भारतीय संस्कृति जो है इसके अंदर नहीं आएगी। यही कारण है। यह कोई ऐसा नहीं है, राम जो है हमारे आराध्य हैं, वो अलग बात है, लेकिन भारत के वो जो है नायक है। राम प्रभु श्री राम ने ही राष्ट्रवाद की शुरुआत किया। जब यहाँ से वो वनवास में गए थे तो यहाँ से अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे और प्रतिदिन अयोध्या की मिट्टी का पूजन करते थे, ये दिखाने के लिए कि भारत का प्रत्येक बच्चा वो चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसके लिए सर्वोपरि अपना देश है। जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उस क्लैरिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि ये पॉलिटिकल
प्रोजेक्ट है उसमें कहा गया है कि ये आधा अधूरा मंदिर है और अभी जब तक पूरा मंदिर भी तैयार नहीं किया गया 2024 इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसका इनॉग्रेशन करने की डेट निकाल दी और इसी वजह से कहीं ना कहीं भगवान राम के सेंटिमेंट्स भी हैं लोगों से जुड़े हुए, लेकिन क्योंकि इसको ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया गया है इस वजह से हम लोग डिक्लाइन करते हैं। 2024 के इलेक्शन से भी इसको जोड़ा गया है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के डिक्लेरेशन? देखिए, ये बात तो सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है यह सिर्फ राम मंदिर के कारण है। पहले जब 2 सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी का, जहां कोई पूछता नहीं था, जब से बीजेपी ने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये मंदिर बनाने के पहले ही बीजेपी को भगवान ने राजगद्दी दे दिया।